they are going to use, if they are going to create some tables, अगर एक type का data है तो what kind of a name they have given, all those naming conventions, everything we have covered. Apart from that, we have started that ETL and whatever the base documents are required when we are going to perform and why we need a ETL. That is also we have answered here. And after that, based upon that base documents, how the development will start and how we are going to develop that task, because ETL development basically revolves around whatever the mapping sheet they are going to distribute among the team of testers and developer, because they are going to start the test planning, you are going to start the development, and BA is the responsible person. And whenever he is going to provide the walkthrough during the scratch of that particular project or release, then he will involve all the personalities from both the teams. Okay. So once he will deliver that walkthrough, or sometimes they will give, sometimes they will not give, they will directly give you the document and they will conduct a separate walkthrough also. ऐसा नहीं है कि combine होगा यहाँ पे कोई there is no hardcore rule, depends upon that project requirement, depends upon that project availability, depends upon the teams, how depends upon their work culture. It happens, means sometimes they are going to create the separate walkthroughs, separate peoples will conduct, और ऐसे करेगा BA will conduct only walkthrough to your managers or team leads, and after that team lead will provide the same walkthrough to your teams and they will assign the task. After that they are going to ask you to develop this kind of scenarios. Okay, so यहाँ पे जब whenever you are going to see that mapping sheet, suppose I will show you one mapping sheet here. Simple approach. You guys are able to see my screen, right? Yes, sir. Yes. So this was the task. This is one simple mini project, or you can call it a simple task what we have developed for your understanding. तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस है, जैसे हमारे पास एक्सेल है या ओरेकल डीबी है या .csv फाइल है. After that we are getting that conversation into the staging layer, and this is what your landing, and this is your staging, and this is your data warehouse. Warehouse. Okay, so यहाँ पे now these are the sources. यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल वाला सोर्स है हमारे पास, एंड
सिंपल एक एक्सेल एक डेटाबेस है और एक CSV फाइल है, टेक्स्ट फाइल विल टेक, यू कैन टेक दैट। So these are the different sources. So यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे सोर्स टू लैंडिंग का रहेगा, they will place the mapping sheet. Here also they will place the mapping sheet and here also they will place the mapping sheet. Then they will load the data. तो ये मैपिंग शीट कैसे है, ये एक्सेल का अगर डेटा है आपके पास, then in the Excel we don't have any data type. So by default whatever the data type is going to capture or varchar 50 चाहिए for all the databases. They have applied. ये इजी वे मैंने सेलेक्ट किया है, नॉट मोर देन दैट, ऐसा हार्डकोर कोई रोल नहीं है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो अपना डेटा है, दिस इज द ऑर्डर वन टेबल, वट एवर द ऑर्डर वन टेबल वी आर हैविंग, इनसाइड इन दैट डेटा एक्सेल में है, तो उसको जब हम लैंडिंग के टेबल में, लैंडिंग ऑर्डर वन टेबल में लेंगे, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मैपिंग शीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए एंड यू हैव टू डेवलप दैट पैकेजेस एंड यू हैव टू लोड दैट डेटा। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू प्रोवाइड दैट, आफ्टर पैकेज डेवलप करने के बाद आपको एक यूनिट टेस्टिंग करना पड़ेगा, नॉर्मल यूनिट टेस्टिंग, दैट इज नथिंग बट whether the data has been loaded properly, but you need not to prepare the evidences and all for your sake. You have to practically analyze that whatever the package I have developed, that is working fine and the data from source to landing it has been loaded properly. ठीक है, तो इस तरीके का आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये हम लास्ट को देखते हैं, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू कवर सम ट्रांसफॉर्मेशंस। ये क्लियर है, अभी आइडिया आ गया आपको? हाँ सर। Yes. So same pictorial representation we have converted in this format: Excel text database, landing, staging, data warehouse. Then we are going to convert that one. Clear? तो नॉर्मल पैकेज कैसे डेवलप करते हैं, आई विल टेल यू द सैंपल लोड्स, हाउ वी आर गोइंग टू लोड द डेटा। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एट लास्ट वी विल गो फॉर दैट। एक 7-8 ट्रांसफॉर्मेशन से 8-10 ट्रांसफॉर्मेशन आई विल टेल यू। आफ्टर दैट वी विल डेवलप दिस एंड वी विल वाइंड अप ETL सेशन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द BI सेशन। तो आपको इसमें ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एज ETL डेवलपर, बट दैट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इफ आई कैन लर्न, यू कैन इजीली लर्न दैट एंड यू हैव टू एक्सप्लोर फ्रॉम योर साइड। और यहाँ पे कैसे रहेगा, इफ यू आर वर्किंग विथ वन टूल, then you are the developer for that tool only. If you want to become a developer or a developer for another tool, then you have to learn that tool again. अगर इन्फॉर्मेटिका करना है, अपाचे नाइफाई करना है, या कुछ अलग डेटा स्टेज पढ़ना है, then you have to go and you have to learn that. and काफी सारी चीजें हैं, बट आपके लिए पाइथन के साथ इंक्लूडेड है, SSIS is more than enough, so it will be a extra added advantage for you people. Just we will show only 6 months of experience during the start of your career. After that you have shifted your gears to Python data science, so it will give you the great advantage. So that call will not be missed, but in that call 6 months वो आपका they will take the profit of your Python data science। और आप ये रिज्यूम में अगर टैब्ल्यू एडिशन है, then you are acting as a data analyst also, that will be the advantage। तो मल्टीपल प्रोफाइल अगर आपका रहेगा पैचअप में, तो सारी चीजें आपको यूटिलाइज हो जाएंगी। क्लियर है ये? Yes, sir. Then we'll start thing. So we'll close this first and we'll start from scratch. मेरा स्क्रीन पूरा विजिबल है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, so we'll create a simple project, or in that we will create the multiple packages for multiple transformations. तो जब हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपके पास अगर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, एंड जब हम ये पढ़ रहे थे व्हाट दैट,
इंटीग्रेशन एससीडी का जब हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल अप्रोच से, at that time I have told you, I have given some idea. Again I will explain. Integration services project, that is nothing but it will integrate the sources from multiple sources, means यहाँ पे source integrate होगा from multiple places, and it will apply some sort of a transformation, then it will load the data into the data warehouse. And to have this, you have to install the SSIS package. Please go on. Rahul, ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. ठीक है, सो क्लिक ऑन दैट. नेक्स्ट you can give here name. This is 21, 22, 23. So I have created that package, sorry, project here. This is the solution explorer. Here we can have different project parameters, connection managers, SSIS packages, package parts. After that, miscellaneous and some linked resources, but we are not going to into that zone. And these are the SSIS toolbox when we are going to use or have that control flow. And inside the data flow, these are the different tabs, multiple tabs, and you need to aware about each and every tab, what exactly that tab is going to do. So this data flow is nothing but आपका जो data source से target में travel होने वाला है, and inside the data flow only you can apply multiple transformations or single transformation so that the data will travel from source to destination. And this is the parameters. Parameters means अगर आपको कुछ नए parameters add करने हैं from source to target, and that you want to place it at the target में, अगर आपको नए parameter place करके रखने हैं and after that you want to update the value, but those columns are not there or those parameters are not there into the source, at that time you can create from here. यहाँ पे symbol रहेगा add parameter, delete parameter, add parameter to configurations. You can add it like it will come. यहाँ पे आपको पैरामीटर आएगा. You can change the name, you can define the data type, multiple data types, value दे सकते हो, and you can keep that description and everything. This is the event handler. Event handler is nothing but if you select any packages like यहाँ से executables, then अगर आपको रखना है उसके ऊपर track, see अगर कोई पैकेज एग्जीक्यूट हो रहा है, if it is integrated to another package, and if you want to create that event particular, अगर error event करना है या post execute on post validate something, means ये action होने के बाद ये action generate होना चाहिए, because we are working on a multiple पैकेजेस. अगर एक पैकेज एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ऑटोमेटिकली दूसरा पैकेट एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब हम प्रोसेस ऑटोमेट करेंगे, एक बार हम जब पूरा फ्लो जनरेट करेंगे और उसके बाद में हमको ऑटोमेट करना है और डिपेंडेंसी रखना है, एक पैकेज के बाद दूसरा पैकेज, दूसरे पैकेज के बाद कुछ और पैकेज. बट इफ यू वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ अ डिपेंडेंसी, देन यू कैन क्रिएट फ्रॉम इवेंट हैंडलर्स. मींस अगर एक पर्टिकुलर इवेंट ऑकर होता है तो ये पैकेज एग्जीक्यूट होना चाहिए. Okay. After that, this is the package explorer. What we have seen here in solution explorer. So configuration manager है, log providers, executables, parameters, event handlers, variables. What are the things? All those things you can observe here. ठीक है, ये बहुत सारे system defined variables है. And these are the event handlers. If you create here, it will be there. अगर यहाँ पे आप कुछ इवेंट हैंडल करते हो तो पैरामीटर अगर आपने यहाँ पे जनरेट किया है तो दैट पैरामीटर्स विल बी शेयर or it will be available here. So these are the different tabs which is used in a SSIS tool. Now inside the data flow, I will show you the normal load. यहाँ पे मैं transformations वगैरह कुछ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, just I am applying or creating that files from different format to database sample load. So just write it here. Here's the sample load.
So go to data flow. So these are the favorites. That is nothing but source. अगर आपको पता नहीं है Excel source है available है नहीं है, then you can drag and drop here. तो यहाँ पे आपको इतनी सारे sources है. You can use any of the one source. SQL Server है, Excel है, flat file है, Oracle है. तो first we'll start with Excel. New. Click on OK. यहाँ पे it will ask which path you are going to select and where your source is exactly located. So browse that. So this was the path I have selected here. ये मेरा source है and inside in this I am having 1000 rows. So I want to load this. I want to convert this data, whatever the data is there in the Excel format. I want to convert in table format. And for that I am creating one simple package. So what I can do is, okay, your database is already there. सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। सर देखो फ्रीज हो गया क्या? मेरे को लगा मेरी हुई। सबकी होगी सर। सबकी हो गई सर। कहाँ तक लास्ट में दिखा था स्क्रीन? कौन सा सर, वो स्क्रीन दिख रहा है सर वो आपको? ब्राउजर फाइल ड्रैग ब्राउजर करते टाइम का वैसा ही है। डमी डेटा था, आपने ओपन किया था बस। उसमें कौन सी फाइल थी वहां से पूरा बंद हो गया। डिस्कनेक्ट हुआ? यस सर। हाँ सर। यस सर, हो गया। एक सेकंड में। अभी दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। कनेक्टिविटी इशू। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या मेरा? नहीं सर। नहीं नो सर, नो। नो सर। पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा सर। अभी भी नहीं दिख रहा सर। नहीं, नेटवर्क चला जा रहा है मेरा। That was the issue. सर गूगल मीट पर ज्वाइन करेगा? नहीं, मैं कल का लेक्चर गूगल मीट पे ही शेड्यूल करता हूँ। नहीं, ये उसका इशू नहीं है, मेरे साइड से नेटवर्क इशू है। उस इशू की वजह से हो रही है। Is there any luck to see my screen? नो सर।
कनेक्शन चेक कर रहा हूँ थोड़ा. My voice is audible. And my screen should be. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Just check it once. No, sir. Again, not No, visible. sir. No, sir. वैसा ही दिख रहा है No, same sir. दिख रहा क्या है यार ये? We'll stop then. What we can do. I will check it and I will get back to you. Evening कब है आपका class? सर 9 10 बजे बजे ले सकते हो आप 10 से 11 नहीं तो 7 Evening No, में? sir. 7 o'clock से है sir. 7 to 8 है क्या? Yes, Okay, sir. we'll do one thing. We'll connect 7 से 8 tomorrow. कांतिलाल सर का है 7:30 to सर. 9. ठीक है आपका शेड्यूल रहने दो. मैं I will connect tomorrow only. Okay, sir. थोड़ा Okay, sir. we'll stay some more. 1.5 or 2 hours. And we can manage that. है और सर मीट पे ही लिंक क्रिएट करो उस पे भी क्या होता है I will directly create that link on Google Meet. I will share that on your email IDs. यस सर थोड़ा जल्दी होती है सर कनेक्ट Okay, sir. 21, 22 to 23. days to find out it's complete. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you.